अस्सलाम वालेकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुशामदीद। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको लगाने से पानी हमेशा दूर भागेगा। इस चीज़ का नाम एक और है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ऐसी चीज़ जिसको वाटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको मैं किसी भी सरफेस पे लगाऊंगा तो वो पानी उसके ऊपर नहीं आएगा। इसके ऊपर नई ईजाद हो रही है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे है ये वाला ऐसा मटेरियल जिसको यूज़ करके पानी को दूर भगाया जाता है। तो ये वीडियो आपके सामने है, ये एक साइंटिस्ट हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम पानी को रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखें, ये उसने अपने हाथ में वो लिया है और वो देखें अपने सिर्फ हाथ में रब कर रहा है। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से किसी भी चीज़ को हम वाटर रेजिस्टेंस बना सकते हैं, और ये बड़ी ईज़िली अवेलेबल है और ईज़िली ये बन जाता है। तो देखें, इसने आराम से देखें हाथ पे लग गई। अब तो देखें, कहता है कोई पानी टच नहीं हुआ। आपको देखें इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन ये बड़ा कमाल फिनोमेना है। जैसे ये देखें, पानी के अंदर उसका हाथ जाता है, यहाँ तो पानी उसके हाथ को ज़रा टच नहीं करता। फर्दरमोर उसके हाथ पे क्या है, एक सिल्वर अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है। ये सिल्वर अपीयरेंस उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको शो होती है। तो क्या है, वो अपना हाथ आपको बाहर निकाल के दिखाएगा तो देखें पानी को इस तरह से पकड़ा है और पानी उसके साथ ज़रा भी नहीं चिपक रहा। तो उसके हाथ देखें वाटर प्रूफ हो गए हैं, इसको हाइड्रोफोबिसिटी भी कहते हैं। तो वो आपको यही डेमोन्स्ट्रेशन उसके बाद बता रहा है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे रेजिस्ट करते हैं ताकि वो H2O उसको आके ना लगे। तो इस तरह से कह रहा है, देखें मेरे हाथ पे कुछ भी नहीं आया। तो इसकी और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बड़ा कमाल फिनोमेना है, इसको बहुत जगह यूज़ कर रहे हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। Generally, there is some interaction between solid and liquid, but it's difficult to imagine these unique tiny drops that are unable to wet the surface of the material. Science has made some great progress in recent decades in the field of hydrophobicity and opening a wide range of applications. The hydrophobic surface is based on the lotus effect. This effect was discovered in the 1970s from the microscopic observations of the natural hydrophobic properties of the surface of a lotus leaf. The lotus plant is comprised of an adhesive, non-polar and wax-like substance, which is what causes the lotus effect or hydrophobicity, which is featured by the lotus flower, which always appears clean despite growing in muddy areas. Research in this field is very advanced and focused on finding a material with the highest level of water repellency to achieve a material extremely water repellent, which would be a huge help for many industrial fields. This is a live demo of a hydrophobic surface. Its water repellency is investigated by simply insulating it and dipping it in water. The insulated device is protected by water damage, which we extremely love for our smartphones during the rain. In addition, your walls can be protected from any dirt after being coated with this magic material. तब तक के लिए वीडियो इतनी ही है। अगर आपको ये अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।